Hello everyone. Today I am going to do another part of speech with you, that is pronouns. As the word suggests, pronouns, the prefix pro here tells us that this is the part of speech which is used to replace nouns in a sentence. To replace nouns in a sentence, we use pronoun. This is a common meaning definition which you people must be knowing. So, when we say that it replaces noun, what does it mean? It means that, for example, like if we say, uh, Meera is a famous artist, okay, she is my friend. Now, in this second sentence, this word she has been used for none other than Meera only. But we need not to repeat Meera. We need not to repeat this proper noun. In place of this proper noun, we can use she, which is actually a pronoun. तो क्योंकि यहाँ पर she मीरा को रिप्लेस कर रहा है जो कि एक नाउन है, इसीलिए हम इसको प्रोनाउन कहते हैं. ओके, सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आर प्रोनाउंस एंड व्हाट वी यूज देम फॉर. वी यूज देम टू रिप्लेस nouns in sentences, right? Okay, now let us talk about the types of pronouns. Now we'll be talking about the types of pronouns in detail. Okay, the first and foremost is personal pronouns. Please understand personal pronouns. Now, as the word suggests, personal means belonging to a person. Person, you can say, like, these are the pronouns which are used for persons, basically. Uh, and that person, in a way, you can say that these are the pronouns. Personal pronouns are those pronouns which replace nouns, but they may function as the subject or the object. Okay, they may function as the subject or an object in a sentence. किसी भी sentence में जो personal pronoun होते हैं वो subject या object किसी का भी काम कर सकते हैं. ठीक है, अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, because let me tell you children, these personal pronouns are very important. Now please understand, we can further divide them into two parts. One can be subjective, okay, subjective personal pronouns, and another can be objective personal pronouns. Subjective personal pronouns, objective personal pronouns. What is subjective? Subjective, that refers to subjects in a sentence. ओके, इन सेंटेंसेस जो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेगा वो सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन होगा, और किसी भी सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा वो ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन होगा. यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे इफ वी से वी प्ले विद देम. हम उनके साथ खेलते हैं, वी प्ले विद देम. वी भी यहाँ पर प्रोनाउन है, देम भी प्रोनाउन है, लेकिन वी इज एक्टिंग एज सब्जेक्ट, right? So this is subjective personal pronoun, and them is acting as an object, so it is objective personal pronoun. All right, now, so why do we need to understand this subjective objective? Because when we learn about these personal pronouns, and especially the three persons, then we need to know their subjective use also and objective use also. कैसे, ये देखिए. First of all, we should know that there are three types of persons that we have. First person pronoun, first person, second person, and third person, right? These are the three persons that we have in personal pronouns. अब फर्स्ट पर्सन में हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों की बात करेंगे. मतलब कि फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट की तरह कौन से प्रोनाउन यूज हो सकता है? आई, and plural of I, we. These can be used as subject. And objective इनके क्या होंगे? I का objective होगा me और we का objective होगा us. Right? Similarly, in the second person pronoun is always you. You. And objective इनके क्या होंगे? You का objective हमेशा you ही होता है.
All right. Now, third person pronoun. Third person pronoun, please understand he, she, it. Okay, he, she, it. He for masculine, male, she for feminine, female, gender, and it for any animal or object. It is used for animals also and for objects also. We use it. अब इनके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं. ही का ऑब्जेक्टिव होगा him, राइट. शी का ऑब्जेक्टिव होगा हर, और इट का ऑब्जेक्टिव विल रिमेन एज इट. Now the plural of he, she, it is always they, which is also third person pronoun, and they का objective होगा them. All right. So I hope you understand what is subjective personal pronoun and what is objective personal pronoun. For more clarity, थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं. देखिए, subjective pronouns जो होते हैं, they always answer who or what in a sentence. Who is the sentence about or what is the sentence about. ठीक है. जबकि objective pronouns are those who or what that has been acted upon. ओके, जिसके लिए कही जा रही है बात, वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल. ओके, इफ वी से लाइक यू ऑलवेज हेल्प योर फ्रेंड्स. यू ऑलवेज हेल्प योर फ्रेंड्स. योर फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प यू. योर फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प यू. अब देखिए, दोनों ही केसेस में हमने सेकेंड पर्सन प्रोनाउन का यूज किया है, राइट. लेकिन यहां पर दिस इज एक्टिंग एज द सब्जेक्ट, एंड इन द सेकेंड सेंटेंस इट इज एक्टिंग एज द ऑब्जेक्ट. क्योंकि यहाँ पर हु ऑलवेज हेल्प योर फ्रेंड्स, यू ऑलवेज हेल्प योर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है. जबकि योर फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प यू, हियर इट इज, दिस इज ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन बिकॉज इट इज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट. Alright, I hope this is clear. Okay, this table is very important for you to know. आपको पता होना चाहिए first person pronouns कौन से होते हैं, second person and third person, and what are their subjective and objective. Okay, now let's come to the second types of pronouns, which are possessive pronouns. Possessive pronouns. So as the word suggests, possessive means possession. पोजेशन क्या होता है? पोजेशन आप कह सकते हैं एक तरह से अधिकार, हाँ, बिलोंगिंगनेस, दैट इज ऑल्सो लाइक पोजेशन, राइट. सो possessive pronouns actually tells us that these are the pronouns which indicate possession or sometimes relation also. ओके, वो हमें रिलेशन भी बताते हैं कि इसका इससे क्या रिलेशन है. ओके, सो पोजेसिव प्रोनाउंस जो होते हैं, दे टेल्स अस अबाउट पोजेशन. Now let us talk about possessive pronouns. Again, we'll talk in those three persons: first person, second person, and third person. So in the first person, as we know, first person is I and we. So possessive pronouns of them will be, अगर हम उसके possessive pronoun की बात करें, तो उनके आई का पोजेसिव प्रोनाउन होगा माइन, राइट, और वी का पोजेसिव प्रोनाउन होगा आर्स. सेकेंड पर्सन प्रोनाउन इज यू. इसका पोजेसिव प्रोनाउन हमेशा होगा और योर्स. थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही का पोजेसिव होगा हिज. शी का पोजेसिव होगा हर्स, राइट. एंड इट का कोई पोजेसिव नहीं होता है बेटा. Please understand, it doesn't have any possessive pronoun form. And then of course we have they also. They का possessive होगा theirs, right. So these are the possessive pronouns. अब एक चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में समझनी पड़ेगी, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन possessive pronouns and possessive adjectives. Difference between possessive pronouns and possessive adjectives. Adjectives में भी possessive adjectives होते हैं, and I have seen the students getting confused in both of them. Let us talk about
possessive pronouns here, this side on the left side, and possessive adjectives, all right, on the right side. Okay, so possessive pronouns, please understand, they show possession by standing instead of nouns. Okay, वो noun की जगह पर use होते हैं. They show possession by standing instead of noun, या फिर रिप्लेसिंग बाय रिप्लेसिंग नाउन, नाउन को रिप्लेस करते हुए उसकी जगह पर हमेशा पोजेसिव प्रोनाउंस यूज होते हैं. जबकि पोजेसिव एडजेक्टिव्स जो यूज होते हैं, दे इंडिकेट पोजेशन बाय क्वालिफाइंग अ नाउन. ओके, दे इंडिकेट possession by qualifying a noun. Now please try to understand the difference. Possessive adjective का काम है noun को qualify करना. Possessive pronoun का काम है noun को replace करना. Alright? मतलब replace noun as they are used instead of nouns, you know. Possessive pronoun का काम वो है. जबकि possessive adjectives जो होते हैं वो noun को qualify करते हैं. इसका मतलब they are placed before nouns. ये हमेशा noun से पहले लगेंगे. Possessive adjectives are placed before nouns and possessive pronouns are placed in place of noun instead of noun. ठीक है, अगर हम पोजेसिव प्रोनाउंस की बात करें तो वो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, आई का पोजेसिव प्रोनाउन होगा माइन, लेकिन पोजेसिव एडजेक्टिव होगा माई. माई वी नेवर यूज अलोन. माई बुक, माई हाउस, माई टीचर, माई फ्रेंड, we are always using it before noun. So my is possessive adjective, it is not a possessive pronoun. Possessive pronoun क्या है? Mine. Similarly, yours, yours is possessive pronoun, but your is possessive adjectives. Okay, his, but the use will be different. In case of she, hers is possessive pronoun while her is possessive adjective. Ours is possessive pronoun while our is possessive adjective. All right, I will tell you the use also. मैं आपको use बताऊंगी. Theirs is possessive pronoun जबकि their is possessive adjective. और जैसा मैंने आपको बताया था कि it which is the third person pronoun, उसका कोई भी possessive pronoun नहीं होता है, उसका सिर्फ possessive adjective होता है, that is its. Okay, now let me clarify it more to you by giving some examples. It will be more clear to you. See, if we say this is not Ravi's book, all right, this is not Ravi's book, his book is new. Please understand, this is not Ravi's book, his book is new. Now this word his is used before the noun, और वो ये जो book है ना noun, उसको qualify कर रहा है, उसकी quality बता रहा है कि this book is his book. His means Ravi's book, right? So in this condition it is possessive adjective. But if we write the sentence like this is not Ravi's book, his is new. His is new. तो यहां पर हमने क्या किया है बेटा, यहां पर हमने दिस वर्ड हिज इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ रवि. ओके, सो इट इज स्टैंडिंग अलोन, इट इज स्टैंडिंग इंस्टेड ऑफ द नाउन, दैट इज व्हाई इट इज पोजेसिव प्रोनाउन. ऑलराइट, here it is not possessive adjective, here it is possessive pronoun. Why? Because his replaces the noun. Okay, and what is that noun? That is Ravi's book. रवीज बुक की जगह हमने हिज का यूज किया है, इसलिए ये पोजेसिव प्रोनाउन है. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, look at some more examples. Look at some more examples. If we say this is
My bag. I am taking very simple example. This is my bag. And we are here saying this bag is mine. Yes. Now please tell me, when we are saying this is my bag, we are using it before bag. So we are qualifying bag. So here it is possessive adjective. But when we are saying this bag is mine, okay, so here we are replacing a noun. So here this is a possessive pronoun. I hope it is clear. Okay, you need to understand this because I have seen children getting very much confused between possessive pronouns and possessive adjectives. All right, now let's come to the next type of pronouns, and the next is demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns, as the word suggests, demonstrate means to show, dikhana. Okay, so these pronouns are used to point out the object or objects, to point out object or objects they indicate. All right, जिस भी ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स को हम इंडिकेट करना चाहते हैं उसके लिए हम ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं. Right. Now let us take some example, and mostly you see these demonstrative pronouns are again this, that, these, those. These, those are plural, this, that, singular. All right, they are used for objects also, objects only. Okay, so like this is a beautiful vase. So this is the pronoun here. That was a good joke. That is pronoun, demonstrative pronoun. Right? This is very easy. So I don't think you need example to you need any written example for this. Now let us talk about interrogative pronouns. Interrogative pronouns are actually the words which are used for asking questions. Used for asking questions. All right, like what, which, who. अब यहां फिर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी बेटा. यू हैव इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स ऑल्सो, यू हैव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स ऑल्सो. सिंपल फंडा है जो, जैसा कि मैंने आपको अभी पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस बताया. अगर नाउन से पहले लग रहा है ना, इफ इट इज कमिंग बिफोर द नाउन, ऑलराइट, देन इट इज एडजेक्टिव. व्हाई? बिकॉज इन दिस वे इट इज क्वालिफाइंग दैट नाउन. बट इफ इट इज यूज्ड अलोन, देन इट विल बी प्रोनाउन. ओके, फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल हियर. अगर हम ये कहें विच इज योर बैग, ठीक है, एंड वी आर सेइंग विच बैग इज योर्स. सो विच इज योर बैग, विच यहां पर अकेला है, इट इज आस्किंग क्वेश्चन. ओके, सो इन दिस कंडीशन इट विल बी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. लेकिन अगर हम इसको नाउन के साथ यूज कर रहे हैं तो इट विल बिकम एन एडजेक्टिव. आई होप इट इज क्लियर. ऑलराइट, ओके. Next is, let's talk about the next type of pronoun, which is, fifth one is reflexive and emphatic. Reflexive and emphatic pronouns, they are actually used when the action done by the subject reflects on the subject. Okay, जब जो एक्शन किया है, और एम्फेटिक प्रोनाउन भी एम्फेसाइज करते हैं सब्जेक्ट को. ओके, तो हम थोड़ा सा इसको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे. प्लीज अंडरस्टैंड, रिफ्लेक्सिव इज व्हेन the action reflects on the subject. Action reflects on the subject. And emphatic, it emphasizes the subject. ठीक है, emphasize क्या होता है? Emphasize means किसी चीज पर जोर डालना, है ना, to give it more importance, you can say. Okay, now for example, please let me tell you some examples. If we say
I made some tea for myself. I made some tea for myself. मैंने अपने लिए चाय बनाई. Okay, so here myself is reflective pronoun because it is reflecting on the subject. What is the subject? I से ही myself बना है ना. अगर you होता तो उसका reflective क्या होता? Yourself, right? Reflective और emphatic ये दोनों ही pronouns हम self लगा के बनाते हैं. Singular pronoun होगा तो self लगाएंगे. Okay, he का क्या होगा? Himself, right? Her, she, herself. लेकिन अगर इन्हीं के प्लूरल्स होंगे तो क्या होगा? आई का वी है तो वी का होगा आर सेल्स, राइट? इफ इट इज ही, सॉरी, ही इज सिंगुलर, दे themselves. अंडरस्टूड? सो ये तो हमने ये सीखा कि हम रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस बनाते हैं सेल्फ या सेल्व्स एज सफिक्स यूज करके. ओके, वी ऐड दीज सफिक्स एंड देन वी मेक रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन देम. जैसे अभी मैंने आपको एक सेंटेंस बताया, आई मेड सम टी फॉर माई सेल्फ, मैंने अपने लिए एक चाय बनाई. ओके, तो यहां पर माई सेल्फ जो है वो सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है, इसमें सेल्फ लगा हुआ है. But if I say, I myself made some tea, मैंने खुद चाय बनाई. ओके, तो यहां पर ये जो माई सेल्फ यूज हुआ है ये सब्जेक्ट के साथ यूज हुआ है. Why? Because to put emphasis on it, we want to emphasize this fact that मैंने खुद ये चाय बनाई. उस स्टेटमेंट पर थोड़ा जोर डालने के लिए हम एम्फेटिक प्रोनाउंस का यूज करते हैं. इज दैट क्लियर और नॉट? अगर हम कहें दे वर ब्लेमिंग देमसेल्व्स फॉर द डिफीट, वो हार के लिए अपने आप को ब्लेम कर रहे थे. दे वर ब्लेमिंग देमसेल्व्स, दे देमसेल्व्स हैव टू बी ब्लेम्ड, उनको खुद ब्लेम किया जाना चाहिए. दे देमसेल्व्स हैव टू बी ब्लेम्ड. वहां पर हम सब्जेक्ट के जस्ट पास में, बराबर में, जब हम ये सेल्फ वाले प्रोनाउंस लगाते हैं तो इसका मतलब वो एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाता है, बिकॉज वी वांट टू एम्फेसाइज ऑन दैट फैक्ट. आई होप इट इज क्लियर. Okay, now let's move to the next. So it refers to some nouns implied और understood. Okay, जिसके बारे में हम श्योर नहीं है लेकिन वो implied होती है या understood होती है. जैसे कि somebody, anybody, nobody. Someone, anyone, no one. हाँ, something, anything, nothing. Right? So these are indefinite pronouns. All right. Similarly, in the same type of, we have reciprocal pronouns as well. Reciprocal pronouns. So reciprocals are words like each other, huh? Each other, one another. All right, एक दूसरे को. They refer to an action occurring in one direction and also in the opposite direction. They play with each other. The children looked at one another when surprise gifts were given. Okay, so these are called reciprocal pronouns. All right, the next is distributive pronouns. Distributive, as the word suggests, distributive pronouns, they refer to persons or things one at a time and always singular. Okay, so distributive pronouns are actually either, neither, right? They are distributive pronouns. Now the next is, and one very important, that is relative pronoun. Relative pronoun. Now please understand, relative pronouns are used to add information about a noun already mentioned.
ठीक है। किसी ना जो कोई नाउन जिसके बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है, उसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन ऐड जब हम करते हैं, एंड दीज रिलेटिव प्रोनाउंस आर मोस्टली यूज्ड टू जॉइन सेंटेंसेस आल्सो। ओके, जैसे हु, व्हाट, व्हिच, राइट, लाइक, हाँ, दैट, these are relative pronouns. Okay, like you can say, this is the place where I met my friend. हाँ, ये वो जगह है. So where is actually it, where is the relative pronoun, and you know it is used to add some information to this noun place. Okay, uh, that is the house where I used to live. Huh? Rita is a dancer. Rita, who is a great dancer, is my friend. Okay, so who is a great dancer? Who is used to add some information, add something to the noun Rita, and you know, and it is also used to join sentences. Okay, so relative pronouns are also used to join sentences. So I hope this topic of pronouns is clear to you, children. If you have any doubts, any queries, you can always ask me with your comments. Thank you. Bye bye.